Great. Welcome, everyone. Welcome to another open discussion. And today's topic for us for the open discussion is how do I handle rejection? Right. And a little bit about how these open discussions go, as there are some new people who have joined us today. So, guys, we keep this an open conversation, a two-way conversation. So it's not like we're going to deliver anything, but we're going to keep it actually interactive. So all of you are invited to participate, to converse, to ask your question, to share your stories. As today's topic is about rejection, you can talk about that, and we are going to keep it interactive that way. Cool. So, beginning with today's topic, what is rejection? Right. So, in simple terms, in layman terms, when it comes to rejection, it is when somebody says a no to us, somebody says no to things which we want, right, or which we desire. And pretty much everybody, every single one of us have gone through, have suffered from some or the other kind of rejection in our life. So it's not like it's an experience which is interlinked to anything. It's like, as humans, it's a part of our growth, it's a part of our journey, it's a part of our evolution. And not always the way we want things to be, not necessarily the person or people sitting on the opposite side of the table would also want things the same way. Could be in terms of relationships, in terms of friendships, in terms of career, in terms of in your family life, in so many different places of our lives, right? And it's natural and normal for all of us to go through those experiences. And another thing which is natural and normal is to feel some amount of pain when we get rejected, some amount of hurt when we get rejected, right? So it would really be a inhuman and false expectation from ourselves if we start questioning ourselves because we are feeling pain or we are feeling hurt after getting rejected. So it's human, it's natural, and it's normal to feel bad, right? Um, but we are going to dig deeper into this topic of rejection because yes, there is a line when things where we feel the pain, where we feel the hurt, which are natural, normal, and okay, healthy in nature. But there are things in the spectrum where things start really getting irrational and unhealthy. So we are going to talk about those things. So basically, um, uh, you know, while it's natural to feel that way, if we get stuck in that space for too long, right, and we continue to now dwell into those things, we start thinking that, this is how it is going to be, this is how it is for me, I am a failure, I am like this, I am like that. So we start, in case we start seeing rejection, as a validation, as truth, as something which is, oh my god, now an abstract thing, now it's, this is how, what has happened. If we think that it's never going to change, we have lost hope. So or we start dwelling ourselves into doing things or acting in a certain way so that somehow we could get that acceptance which we wanted in the first place. And when we start getting indulged into those harmful behaviors, that's where the irrational and unhealthy side of rejection starts showing up. Hmm? But why rejection hurts in the first place, right? So basically, we are all human beings. We have some fundamental core needs that we all have. One of those needs is the need of connection, the need of love, the need of acceptance that we have from other people. Other needs being the need of freedom, the need of variety, consistency, feeling significant, being recognized, growing in life, and all of these different categories of fundamental, basic. These are like basic human needs. But the moment we feel rejected, one or the other, or maybe more than one,
or two of these needs have gotten broken at that time, and we get into the state of discomfort that my need is not met, right? And because my need is not met, so it's natural and normal to feel that discomfort. But the actual unhealthy part starts when we start feeling that my needs are now never going to get met, because this person has now rejected me, because I did not get this job, because I did not get this person as a partner. So now I'm never gonna find a partner. I'm never gonna end up in the right place. I'm never gonna get things done. And we start dwelling into those things, and that's where the loop has started for us to go into the negative direction. Why it also hurts? Another reason, an important reason. People, those who have rejection wounds from their childhood. So people who feel that they were constantly rejected by their parents, their feelings were constantly rejected by their parents or people around them, the things that they wanted, their needs were disregarded, their needs were rejected as a child. And now as an adult, every time we are in a situation where we want something and we don't, the other person does not say yes to that thing, and the same trauma, the same feelings start coming up, and the same way we start reacting to those situations. So that is another thing why rejection hurts so bad. So even to people who, let's suppose, don't have the rejection wound as a child, they also get going to get hurt by the rejection. But when we have these wounds as a child, when we have seen so much of rejection from people around us, so we have started seeing rejection from a very fixed mindset, from a very negative mindset, from a very because as a child we felt that way, that hurt, that pain, and then we think that, oh, see, again this happened with me, right? And we go into that mode. Those are some important points when it comes to why rejection hurts, and why also, in the same way, we fear rejection so much, right? So we develop a very unhealthy relationship with rejection if we are on either sides of the opposite spectrum. If we have seen too much of rejection, or in our lives if we have seen only and only success, right? You got good grades in school, you got always appreciated, never got scolded, never failed in anything, always the first person in every single thing in your life, right? And people have had those expectations with you, which you are always like running on your shoes. So if we have not seen we have not seen the taste of good and bad both. We have either seen bad. We have all or otherwise seen good. The thing is that some or the other age rejection hits us, right? It when it hits us, and if our experience was in a negative connotation with rejection, then we are going to get into the same loop. But in case there is anybody who feels that I always succeeded in life, they too are going to struggle with rejection, right? And they are going to struggle with rejection in a way that, how come this happened to me? And they are going to start questioning themselves, and they will not know how to handle it, how to handle that rejection, right? So that's why most of us fear rejection, and those are some of the dynamics that happen. There's a lot to talk about when it comes to rejection. It's a very vast topic. So yeah, I've been speaking a lot. Now I would like to listen from, understand from you guys that have you gone through something like this? Have you suffered from rejection? And what was your go-to, strategy to handle it in a, healthy way? So let's listen from all of you. So whosoever wants to talk about, you can just raise your hand, and you can share your story, share, whatever, how you have handled this thing. Anybody? I'm sure some of you have gone through rejection. Yes, Tarun, would you like to go ahead?
Yes. So my first tryst with rejection, uh, and now please clarify if I am on the wrong track. Uh, I thought it was a failure, and so I had started. Uh, I was in a public sector undertaking job, and I left that job and joined a fresh. Uh, in those days, it was not the term called startup, but it was a greenfield project. And just to give you a kind of idea about the scale, I joined from 6,000 crore company to a 30 crore greenfield project. And I was the first technical employee in the uh, project site. And the failure or rejection was this MS shoes imbroglio in stock market happened. And because of that, the capital market, there was this embargo came on IPOs, initial public offerings. And we were in the middle of the project, and there were 121 letter of intents which were already given to different vendors. And uh, I was the project manager at site, and there were 400 people working at site of around 10 vendors: electrical, mechanical, civil, waste, fire, and all that. This was a small uh, chemical project in those days. And I am talking of the year 1993 to 95, 2 years. So, because of this external stock market imbroglio and stoppage of the IPO, the funds got stopped. So, the funds got stopped. So, being a project manager, uh, and so many people working, and now no funds at all, and 1 month, 2 months, few months. So, slowly, everything was stopping. And that gave me the first, what you mentioned in your introduction, you always have been winner, you always have been good at, you have never seen rejection. And so this was my first twist with the failure, because I started feeling after some time myself responsible for a decision which in those days I felt was a bold decision I had taken for my personal development of moving from a 6,000 crore uh, turnover stable PSU job to a 30 crore greenfield project in a private sector. So that effect was very profound. It it shook me to the core, and it took me some time to recover from that. So that's one small example. Yep. Thank you so much for sharing that, uh, Tarun, with us. That's that's good to know. Yeah, Palak, your hand is also up. Yes, Anamika. Actually, in my opinion, I don't think that I am afraid of rejection as such, but I want to share my experience as uh, I don't know. How to handle in rejecting someone when I meet some boys or some people like that, when they interest there is no mutual interest in altogether, so वो पता चल जाता है कि हाँ भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल वी एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम अदर पर्सन. सो ऐसा मैंने भी किया है और सामने वाले से भी मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि हम बस जैसे मिल के आ गए और उसके बाद फिर अगर रिजेक्ट भी करना है तो कोई रिप्लाई ही नहीं आता और हम फिर सोचते रह जाते हैं कि क्या हुआ, कि क्या
क्या चीजें बड़ी नहीं बड़ी या क्या उनका थॉट प्रोसेस है या कुछ भी, मतलब हमें पता ही नहीं चल पाता. सो ऐसा कई बार मैंने भी किया है, नोइंगली अननोइंगली, कि लाइक मुझे पहले पता भी नहीं था कि इसको गैसलाइट करना कहते हैं, कि आप गायब भी हो जाओ और दूसरे को जवाब भी ना दो. तो No, that's एक्चुअली द थॉट ghosting, प्रोसेस not बिहाइंड दिस इज द थॉट प्रोसेस sorry. बिहाइंड That दिस फॉर मी इज कि दूसरे को बुरा ना लगे. तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं उसको क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ. आई डोंट नो कि दूसरे लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरे को बुरा लग जाएगा अगर मैं ऐसे कुछ बोलूंगी तो, और बात बिगड़ जाएगी या जो भी है. तो इस वजह से आई चूज टू स्टे साइलेंट. 1 second. 1 second, Palak. It's called ghosting, not gaslighting. सॉरी सॉरी. Yeah. हाँ. ओके. So या सो उससे आई, क्या होता है फिर? हाँ. सो मतलब मैं तो इसलिए ही साइलेंट रहना चूज करती हूँ, सो दैट दूसरे को बुरा ना लगे, सामने वाले को. और चीज, और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई, एक दो बारी तो मिले तो खुद ही समझ जाएगा कि सामने से रिप्लाई नहीं आया, तो खुद ही समझ जाएगा, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. बट जब ये चीज, सेम चीज मेरे साथ होती है, तो इवेंचुअली वो बुरा नहीं लगता, बट एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ एटलीस्ट पता तो चले कि अगर मेरी मेरी तरफ से मुझे लगता है कि हाँ चीजें ठीक है, स्मूथ है, मैं आगे कंसिडर कर सकती हूँ, पर सामने वाले को ऐसा नहीं लगता, तो मैं ओके हूँ उस चीज से कि उसको नहीं लगता, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो द रीजन. तो ये चीज मैंने फील करी कि जब मैं भी दूसरे के साथ ऐसा करती हूँ तो उसको भी ऐसे ही लगता होगा. तो yeah, this is also, I think, come under the way of how we deal with the rejection, right? So yeah, this is it. Yes, yes, Palak. And it requires a lot of bravery to honestly tell somebody why you said no to them. And most people who go through rejection, they never take out time to just get a very honest feedback from people that it's okay, that it's fine, that it's a no from your side, but I would like to know, so that I can see what I can, if I need to change something, or if it is just simply about your situation. So Yeah, neither people actually, ask but those questions, nor most hmm. people have the capacity to, speak give the honest feedback. And also, do people don't have the capacity to accept that feedback too. तो वो जो मेरा जो माइंड फ्रेम है कि दूसरे को बुरा लग जाएगा, वो मुझे ज्यादा इस चीज से रोकता है कि बेटर है चुप ही रहो, किसी को क्यों बोल के कुछ उसका वो मतलब खराब करना, दिन खराब करना है, कुछ करना. क्योंकि कई बार ऐसे बहुत वैसे फैक्टर्स होते हैं कि जब इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, लाइक जैसे अगर बिकॉज मैं तो शादी के पर्पज से मिलती हूँ लोगों से, तो उस हिसाब से मुझे मेरे कुछ सर्टेन ट्रेड्स है जो मुझे चाहिए. तो जैसे सामने वाले में अगर पर्सनालिटी इशू है या कुछ है, तो वो चीजें अगर आप बोलो तो वो फिर सीधा बंदे की इनसिक्योरिटी बन जाती है. तो उस चीज पे तो मैं स्पेशली सोचती हूँ कि अगर जैसे फैमिली इशू है, कुछ फाइनेंशियल इशू है, तो वो डिस्कस करने में मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, पर जितना मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी बंदे की सेल्फ एस्टीम पे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उससे बंदे को रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है. तो वो चीजें मतलब मुझे नहीं पता कैसे हैंडल करते हैं. Hmm. Hmm. Right. So there is a way of, सामने वाला कैसे इस चीज पे react करेगा, that is not in our control, but definitely how we say those things is, how consciously we put those things out in the right words, हाँ. with the right intention. And हाँ, अगर सामने वाले को actual self esteem issues होंगे, so they are not going to take it in a healthy way. Yeah, yeah. Cool. Let's hear from other people as well. Anupama, anything you would like to share? Yeah, Anamika, and hi everyone. This is not related to anything personal, but yeah, I would like to tell incidents from the professional life. Like from last year, I'm working in a very good company, but before that, I was rejected in several interviews. So initially, I felt very bad. Why it is happening to me? क्या गलती है? And problem here is that like people reject you and they don't give you the feedback. But I got some very good feedback from few of the companies and few of the recruitment managers. So उनकी advice पे work करके and then I prepared for the next interview and जो
अभी करंटली आई एम इन वेरी गुड कंपनी, तो वहाँ पे जो भी मुझे फीडबैक मिला ना प्रीवियस मैनेजर से, रिक्रूटमेंट के लोगों से, आई अप्लाइड दोज थिंग्स इन द in my last interview, and then everything was okay. तो feedback matters, and many a times I felt bad कि am I that bad, but नहीं, जब मैंने उसी feedback को positive way में लिया, then it helped me a lot. तो एक तो ये चीज है कि चलो, now I have learned how to take feedback in a positive way. हाँ, as already Palak mentioned that we should give honest feedback, जो मुझे लगता है मैं मुझे देना चाहिए होता है, किसी को भी देना होता है. जैसे whenever we interview some candidate, then also अगर मैं किसी को reject करूंगी, then I'll give him or her a proper feedback. But problem, actually मेरा main concern है, I have 11 years old son. Many a times he is rejected into several like things. तो आई जस्ट वांट टू नो, लाइक, सॉरी ये मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, तो आई जस्ट वांट टू नो कि उससे कैसे मैं रिजेक्शंस को हैंडल करना सिखाऊं, बिकॉज वी आर लाइक मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स, हमें समझ में आती है, बट बच्चों के साथ इसको कैसे प्यार से मैं हैंडल करूँ सो दैट बच्चे खुद की सेल्फ स्टीम पे ना ले लें. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. या सो पहली तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है ना, वेदर इट इज अबाउट अस डीलिंग विद रिजेक्शन और वेदर इट इज अबाउट people in our life dealing with rejection. So like I was saying in the beginning, it's very natural and it's very normal to feel bad after getting rejected. So ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसको अच्छा लगता होगा after we get rejected. So it's normal to feel bad and it's okay, right? So one thing is that we really need to accept these things, that that low time ki you have gotten rejected, maybe I have gotten rejected, and it's okay to go through the emotions and process the emotions that have been there. उसके बाद दो scenarios हो सकते हैं, right? So what example can I take? So for an example, there is a man, right? And he's looking for partners and he's looking for relationships. But in those relationships, all the women he is finding are complaining to him and they go away, right? And he's like flabbergasted, why this is happening to me, and he's asking those questions, feeling bad that why this is happening. And somehow he gets the courage to ask some of those women that what is the issue. And the women say that you don't communicate, you don't talk, you don't open up emotionally, you are emotionally unavailable to me. And that guy takes this feedback in a positive way. Now there are two options for this guy. Either he can become emotionally available so that he can find out ways in which he can be available to his partners physically, spend time with them and do all of those things. And let's suppose this is a man who is just himself not ready to change these things, because he's right now, relationships are not his priority. His priorities are his work, his priority is something else. So he can also decide that I might not be able to change this about myself, so let me see that what alternative things that I have. So he also chooses for himself that I find women who are compatible to this thing, right? So first of all, the thing is that we become okay with facing these emotions, completely being honest with ourselves, process these emotions and see these things in awareness, that what is it redirecting me towards. And second thing is having that growth mindset, like you said, that if this is the thing that I want, if this is something which I really really desire, then what is it in me that I need to grow, to develop in myself? How can I integrate those feedbacks that I've gotten and I can become more compatible enough to the things that I desire? And second thing is, maybe that is not a thing which I desire that much.
right? And that's why I'm not able to change myself. So let me see that alternatively, what is it that I actually desire? What is it that is actually going to make me feel happy about my life, right? So in these two steps, we can find out, more alignment between what is it that we want, what is it that we desire. So if in case your child is feeling getting rejected and feeling that way, so I know that as a parent, it feels for us that why our children have to go through, such experiences. But trust me, these experiences are stepping stones, because rejection outwardly, first of all, does not mean validation. It does not mean that, the other person rejecting us means that is the truth. It's not written in stone, because value is something which can be different for different people. So let's suppose one thing which I value, it's not necessary that you are going to value the same thing in the same way, right? It's very subjective. Value is a very subjective thing. So we learn about our value when we go through rejection, right? Second thing, rejection gives us redirection. It gives us, this, it puts us in a position where we can choose things more consciously, where we can see the direction in which we are going towards. It's the right direction or it is not the right direction. And if it is the right direction, how are we going to improve ourselves to get into the path of those things? Because unless we if everything is like, just constant and we never get rejected, it's like, we don't, because rejection is a part of the reality. So like, Tarun was sharing his story in the beginning, that we never go to rejection and then we don't know how to handle it. So it's important, because some day or the other day, for some or the other thing, somebody is going to reject you, because value is subjective, right? It's not quantifiable in nature, right? So Um, some people will can I? value you. Yes, please, Akarma. Yeah, I just wanted to add something to this one. So what Anupama is talking about from a parent's point of view. So Anupama, the first and foremost thing is to not overprotect your child. That is the first thing which I can say. Many a times, parents um, themselves don't give the right feedback at home to their kids. तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा पेंटिंग बनाई है और अगर वो अच्छी नहीं है या कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा बनाया, बट वी ओवर गिव द फीडबैक इन द सेंस कैसे हमको लगता है कि हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं इसमें या कुछ है, तो होता क्या है कि किड्स फील एंटाइटल्ड टू ऑलवेज गेट अ यस फ्रॉम द अदर पर्सन. तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर किड्स टू ऑल्सो लर्न कि हमेशा उनको यस नहीं मिलेगा, तो नो भी मिलेगा, एंड इट इज टोटली फाइन to receive a no from the other person. Okay. They should be prepared to receive a no, and they should understand कि no means no. And if someone is not comfortable with something or they are telling them about something, so they should respect कि दूसरे को वो चीज नहीं अच्छी लग रही है या वट एवर इट इज. तो हम कई बार ओवर प्रोटेक्ट करते हैं अपने किड्स को, एंड वी काइंड ऑफ, हमें ऐसे लगता है कि वो उनका दिल टूट जाएगा, अभी तो वो छोटे हैं ऐसे. बट छोटे में ही ये चीजों को सो करने की जरूरत होती है. तो दिस इज व्हाट आई वुड से कि teach them कि the rejection is not so much about uh, they are not rejecting the person, but they are rejecting whatever is there. So if the child has made a painting and it doesn't look very nice and all that, and you can give them some feedback with how they can improve, you can tell them what is good in it and what is bad in it, by making them feel कि ये पेंटिंग की बात हो रही है, ये उस चाइल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है. तो इट्स नॉट कि वी आर रिजेक्टिंग द चाइल्ड, बट वी आर एक्चुअली giving feedback on the topic. So धीरे धीरे उनको ये चीज सिखाने की जरूरत है कि रिजेक्शन इज नॉट
a personal thing. So it's not that you have to take everything personally in that way. It is uh, uh, people have the freedom to say no to something as well if they don't like it. Got it. Is that making Mhm. sense, Anupama? Yeah, yeah. Thank you. This is a new perspective for me. Thank you. No problems. Yeah. And while Akarma was talking, it reminded me of a line, which we hear that there are so many valuable and good things in the world, which, of course, a lot of people cannot afford. So that doesn't mean that those things. So many people, of course, cannot, let's suppose, afford a Mercedes, but that doesn't mean that that car is bad, right? It's just that they cannot afford it. So not everybody is going to appreciate what we put on the table. So it's a very subjective thing. It's like kind of matching of the left hand side and right hand side, and it's not going to match all the time. Or for kids, I have observed that um, हम ही उनको पहले ये सिखाते हैं कि in order to be polite with someone you have to हम उनको सॉफ्टली झूठ बोलना सिखाते हैं. तो बी वेरी माइंडफुल अराउंड दैट. अगर घर में मान लो कि मदर ने कुछ डिश बनाई है और बच्चे को नहीं पसंद आ रही है एंड दे आर सेइंग दैट, तो हम ही उसको सिखाते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने कितनी मेहनत से बनाई है, यू नो यू शुड अप्रिशिएट, यू शुड डू दिस. तो हम ही उनको इनडायरेक्टली सिखाते हैं कि कैसे झूठ बोलना है, बिकॉज झूठ बोलना इज पोलाइटनेस. सच बोलने से दूसरे को हर्ट हो जाता है, तो इसलिए सच नहीं बोलना है. और फिर हम बाद में ये बोलते हैं कि बच्चे झूठ बोलने लगे हैं, बच्चे सच नहीं बोल रहे हैं एंड ऑल दैट. सो वी हैव टू लुक एट अल्टीमेटली one thing every parent should very clearly understand कि your child is a reflection of you. So अगर उनके बिहेवियर में अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट फिंगर एट योरसेल्फ, सी कि आपने कैसे, हाउ यू प्लेड अ रोल इन दैट वन, क्योंकि वो वहीं से ही सीख रहे हैं. तो और कई बार हम नोइंगली अननोइंगली ऐसे नहीं कर रहे, जस्ट इनोसेंटली डू दीज थिंग्स, या यही हमने सीखा है, हमने ऐसे ही किया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ यही किया है, ऐसे ही है. तो दैट इज हाउ इट इज. यू नो स्पेशली जैसे नो किसी को, अब हमारी इंडियन कल्चर में एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो यू नो व्हेन यू आर सिटिंग एंड ईटिंग फूड, आपका पेट भर गया है लेकिन फिर भी आपको आपको कोई खाना दे रहा है, आप नो बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको जबरदस्ती दिए जा रहे आउट ऑफ लव एंड कंसर्न, वट एवर वी कॉल इट. ठीक है. लेकिन इनडायरेक्टली हम जो बच्चा है उसको क्या ट्रेन कर रहे हैं कि तुम्हारे नो की कोई वैल्यू नहीं है, आई एम स्टिल गोइंग टू फोर्स माई विल ऑन यू. तो बेशक वो एक इनोसेंट वे में हो रहा है, लेकिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस थिंग कैन बी डेंजरस, स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड, जिनको हम जिनके नो में फिर वो कन्विक्शन नहीं आती है, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया है कि तुम्हारे नो का कुछ कुछ वैल्यू नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू फोर्स माई विल ऑन यू फॉर वट एवर रीजन. So be very, very mindful how you conduct yourself with the kids as they're growing, and teach them कि it is okay to be honest, it is okay to say what is it that you want to say. हाँ, obviously जैसे पहले बात हो रही थी पलक से, saying that कि उनको ट्रुथ बोलने से नहीं रोकना है. हाँ, उनको आप ये सिखा सकते हो कि अच्छे तरीके से भी बोला जा सकता है. जरूरी नहीं है कि झूठ बोल के ही आप पोलाइटनेस के फॉर्म में उनको ये सिखा रहे हो कि सच मत बोलो, क्योंकि इससे दूसरे का दिल दुखेगा, तो कुछ भी बहाना मार दो और कुछ भी कर दो. ये तो हम ही उनको झूठ बोलना सिखा रहे हैं. तो बड़े होके आज उन्होंने इस बारे में सीखा है, बड़े होके वो अपने आप इस चीज को एक्सपोनेंशियली और चीजों में लगाएंगे. उस टाइम फिर दुख नहीं होना चाहिए आपको, फिर हमें ये नहीं लगना चाहिए इन्होंने कहाँ से सीखा, इन्होंने इनको किसने सिखाया, हम ही ने सिखाया, हम ही ने इन इंसिडेंट से उनको सिखाया. So that is the thing that we need to be very mindful as there कि
teach kids how to be more polite in delivering the truth, but never replace truth with a white lie, with a soft lie, or anything like that, because that is not going to give them any kind of empowerment going forward in life. Got it, Aparna. This is very like a, a tube light moment for me. Thank you. No problems. Thanks. Thank you. Thank you. Tarun, your hand is up. You want to say something? Yeah, I just wanted to echo your point. In a professional setup where my son the other day came, and I am based out of Mumbai and my son is based out of Australia, and he came feeling very sensitive that my manager spoke to me very rudely, and tomorrow I am not going to the work. I think I have felt very bad. He should not have used those words and all that. So I heard him patiently, and then after hearing his story, I told exactly the same conclusion which you mentioned few minutes back, that it was not you as Kushagra, my son name, that is rejected. It is the work which was supposed to be done and was a preference which probably your manager felt can be done in an alternate manner, and for that he gave you what he gave you. So you should not feel bad about that. As a person, you should take it as a feedback on the priority with which your manager wants the work to be done in a superstore where he was working at that point of time. So once he got that, he became cool and he got the right perspective, and then he was fine. Yeah, thanks. Thanks. Thanks, Tarun. Thanks for adding that. Thank you. Deepti, your hand is up. You want to say something? You are on mute, Deepti, if you're talking. Yeah. Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes, we can hear you. You are audible. Yeah, go ahead. Hello. So I just joined in between only a few minutes back. So I was listening about the rejection regarding a kid. So I want to talk about my daughter here. She's 4 years old. But what I observed about her is like about the kids around her. I find them very bossy in the sense they try to instruct my daughter ki like this, do like that in a very like dominating kind of way. And I found my daughter to be following them just to please them. So I find this people pleasing kind of a behavior in her and not answering them confidently. So how do I handle things like this? Because she is a small child, maybe I can mold her at this stage. The why to please people just to keep them in your circle. Because this actually happens amongst us adults also. So, if this happens with you, what do you do? Sorry, you're not audible. If this if this happens to you, what do you do? Well, How would I you maybe handle as an adult? I will answer back softly, but I will not take this dominating behavior. I told my daughter to answer back and not be rude, but answer back politely and not take this dominating behavior from kids around. But somehow I observed this earlier also, and I do not see a change in this behavior of hers. Hello? So, sorry, I was on mute. So the reason you didn't see any change in her, Yeah. क्योंकि क्या हुआ कि आपने एक प्रॉब्लम देखी, एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की, और पेशेंट से बात किए बिना ही आपने दवाई भी सजेस्ट कर दी. Can you please तो elaborate on आपने it? आपने डायग्नोसिस का तो स्टेप ही बीच में से एलिमिनेट कर दिया. यू डिडंट इवन टॉक टू योर डॉटर टू फाइंड आउट कि वो ये करती क्यों है, उसको मिलता क्या है ये करने से. Yeah, I did not ask her. तो यू हाँ, तो यू नीड टू एड्रेस दैट पार्ट ना. तो आपने तो सीधा उसको ये बता दिया कि अब इसको क्या करना चाहिए. तो
तो वो क्यों सुनेगी? क्योंकि उसका कुछ और रीजन से वो कर रही है, या यू आर अज्यूमिंग कि उसको ये करना नहीं आ रहा है या उसको ये सिखाना पड़ेगा। लेकिन आपने बिना पेशेंट से बात किए, बिना डायग्नोसिस किए, तो आपने उसको दवाई भी सजेस्ट कर दी, और अभी वो पेशेंट दवाई नहीं खा रहा है, तो आपको दुख भी हो रहा है उस बात का। Yes, I have not asked her why does she do this. हाँ, तो यू हैव टू चेक विद हर कि उसको क्या मिलता है, वो उसको उसको क्या फियर है, क्या क्या रीजन से उसको बेनिफिट क्या मिलता है इस चीज का, उसको ये करने से क्या मिल रहा है, वो चीज एड्रेस करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिप्लेस दैट। सो एनीथिंग दैट वी डू, the benefit that we get from a certain behavior, Mm-hmm. we have to replace that. We have to replace the benefit with an alternate behavior. So she still needs to get the same benefit, but in a more healthier way. उसको फाइंड आउट करने के लिए बिना बात किए, बिना ये जाने कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं लगा पाओगे इसमें, और वो सुनेगी भी नहीं। Okay, okay, I understand. Yes, I've not done this part. हम्म, ठीक है, ट्राई दैट। Yes, sure. Thank you so much. या यस, यस मोहम्मद, यू वांट टू से समथिंग? Yes, hi Akarma. Like, हेलो। yeah, hello, can you hear me? We can. Yes, yes, we can. Yeah, so I was saying that since we are talking about how to handle rejection, just I want to convey I mean, how do I handle rejection? So, since I have not reflected on this so far, but since we are talking about it, so what I do is like, can be any kind of rejection. So, what, for example, I get rejected, like this is someone not completed a deadline, or say and whenever I get rejected, what I do is um, I mean, vent it out someplace else. Like for example, like I got rejected at work, or I got rejected with someone, and then the next day I was due to meet my friends. So there was a friends hangout, so I went there, and for so no reason, like I got into, I mean, like I scolded one of my friends. Like there, it was just a fun chat. I mean, we were just hanging out, having some snacks and everything with the friends. But I was so like preoccupied with the fact that I got rejected. I want to vent it out somewhere, and or if I cannot vent it out at my friends, I vent it out at my younger brother. So, but after I vent it out, I feel like I shouldn't have done that. Okay. Okay. So, like, can you like, how do I like? I don't want to do this again. Like the next time I get rejected, I don't want to like vent it out on somebody else. So, can you suggest me some ways? How can I hope you got my point. So, what, how do you hear rejection when someone rejects you? What is it that goes on in your mind? What is it that you went about? So, there is no reason why they rejected me. I can't find the reason There is behind it. always a reason why they rejected you. The reason may be known or not known is a different thing, Yeah, I but don't know the reason. reason is always there. Huh? I don't know the reason. Yeah, yeah. So that's a better statement to say. I don't know a reason. You can't say that there is no reason. क्योंकि until you keep saying there is no reason, तो फिर वो तो बात और ज्यादा चुभेगी ना। तो पहली बात तो you correct yourself, but telling yourself कि reason तो कोई ना कोई होगा ही, I don't know the reason, तो बात थोड़ी कम चुभेगी। क्योंकि जब कोई ऐसे लगता है कि बिना किसी रीजन के मुझको रिजेक्ट कर दिया, तो ज्यादा चुभती है वो बात। तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल कि कोई आपको कोई सी बात के लिए रिजेक्ट कर रहा है और कोई रीजन नहीं है। हाँ, उन्होंने रीजन दिया नहीं है या आपने पूछा नहीं है तो अलग बात है, बट अज्यूमिंग कि रीजन नहीं है तो ये तो गलत एजम्पशन हो।
राइट assumption वुड बी कि रीजन तो कोई ना कोई होगा ही. So how would you feel if you tell yourself कि there is some reason? Would you still feel that much bad about it? I don't know, to be honest. It's just Think that about I it and tell sometimes me. feel like like I'm being honest, like I feel like I can't take a no. हाँ, so that's a problem that needs to be addressed. And why do you think that everyone has to say yes to you? Why you feel so entitled to only hear yes? Have you said no to someone for something ever in your life so far? How old are you? 30, 31. 31 years में आज तक कभी किसी को नो बोला है किसी बात पे? बोला होगा पर याद नहीं है. अपने छोटे भाई को, किसी को, किन्हीं हाँ, बातों पे भी या कभी भी कुछ नो या बोलते हो, नहीं बोलते हो? या sometimes. Okay, so okay. So then why you say no to? If you can't hear no from other people, then what right do you have to say no to somebody else? तो फिर सेम रूल से खेलो ना, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अकर्मा, एक पॉइंट में इसी बात पे बोलना चाहती हूँ. Just 1 minute. Let me just finish with Mohammed. अभी I just want to finish with him. हाँ, आप बोलना, 1 मिनट रुकिए. हाँ, Mohammed, answer the Yeah, question. Karma, I'm hearing you, but I don't know what to say right now. I'm just नहीं, ये बोलो ना कि ये दो रूल्स क्यों हैं और ये सही है क्या? कि आपको नो बोलना है तो आप तो बोल देते हो, लेकिन कोई आपको नो बोल रहा है तो आपको दुख हो रहा है. तो ये सही है क्या? ये रूल सही है क्या? no. तो एक से चलो ना, या तो किसी को, आप भी किसी को नो मत बोलो. हर बात में आप भी यस बोलो हर किसी को, बट आपको भी पता है कि दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? Yes. आपके पास भी कोई तो अच्छा रीजन रहेगा ना किसी को नो बोलने का. सही है. हाँ, तो फिर दूसरे के पास भी रहेगा ही आपको नो बोलने का. तो फिर वो आपको नो बोल रहा है तो आपको यस क्यों सुनना है? उसको फ्रीडम क्यों नहीं है आपको नो बोलने की? आपको ही क्यों फ्रीडम है नो बोलने की? व्हाई सच एंटाइटलमेंट? Is this practical? Is this not the source of your anxiety? Maybe. Think about it. Think about it, and what all I am saying is pick one rule. So I am not saying कि ये rule सही है या वो rule सही है. I am just saying कि दो rules से मत खेलो. या तो आप भी सबको yes बोलना शुरू कर दो, किसी को भी no मत बोलो, तो फिर then you have the right to feel bad कि मुझे किसी ने no कैसे बोल दिया, मैं तो सबको yes बोलता हूँ. फिर you have all the freedom to vent and all the freedom to complain, and फिर जितना रोना है, जितना भी vent करना है, खुल के करो फिर. लेकिन अगर आपके पास अच्छा रीजन है किसी को नो बोलने का, and you have the freedom, then others also have the freedom. फिर क्यों? Are you following this? Yes, Karma. ठीक है, think about it then. Yes, Ishita, you can. यस अकर्मा. सो ये नो बोलने के बारे में ही मेरा एक थॉट आया कि नो सुनना
कभी कभी मुश्किल होता है जब खुद के सेल्फ वर्थ पे वो बात आ जाती है, जैसे कि कभी कभी लगता है कि मैं कैसा क्या करूं जैसे आई कैन कन्वर्ट दैट नो टू अ यस। ऐसे थॉट आए तो इज इट वर्थ परस्यूइंग दैट पाथ, क्योंकि वो तो कभी then you go into that people pleasing wala stage and then you want to make that no a yes. It depends. It depends that if you are operating from an insecure attachment style or a secure attachment style. So it will depend on that. So a person who is operating from an insecure attachment style uh, will go in a toxic way of converting that no into a yes. But a person operating from a secure attachment style may have the same objective कि मुझको इस नो को यस में कन्वर्ट करना है, बट इन अ मोर हेल्थियर वे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको किसी ने किसी बात के लिए नो बोला है, तो आपने उनका फीडबैक लिया है और आपने उस फीडबैक पे काम किया है ताकि अगली बार आपको नो सुनने को ना मिले, तो ये तो सही है। तो दिस इज अ गुड वे ऑफ इम्प्रूविंग कि किसी ने आपको किसी बात के लिए नो बोला तो आपने अपनी वीकनेसेस, अपनी गैप्स को आइडेंटिफाई किया और आपने अपना ये ठाना कि नेक्स्ट टाइम मैं इनको मौका नहीं दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इनको और बढ़िया करके दिखाऊंगा, या नेक्स्ट टाइम इनको मौका नहीं दूंगा, मैं इम्प्रूव करूंगी इस चीज में। तो दैट इज अ मोर सिक्योर वे ऑफ ऑपरेटिंग। इनसिक्योर वे में कि मुझे अपने ऊपर तो कुछ काम नहीं करना है, मुझे कुछ अपना नहीं करना है, बट मैं कैसे तो मैनिपुलेट करके, पीपल प्लीज करके, साम दाम दंड भेद इनसे मैं यस निकलवाऊं, वो तो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है ना। तो दैट चेक यू हैव टू डू कि वो कौन सी स्पेस से आ रहा है। और अगर कुछ कर ही नहीं सकते उस सिचुएशन के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे हुआ कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो कुछ है नहीं, पर वो आप साइकोलॉजिकली ऐसे जो बोल रहे हो कि जैसे ऑप्शन है कोई इसमें क्वेश्चन में? या ऑप्शन तो नहीं है, हाँ पर मुश्किल होता है एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को कि आई कैन नॉट बी दैट पर्सन, मेरे में इतना लिमिटेशन हाँ है, नहीं कर पा रही हाँ मैं। तो वो हाँ बात हाँ एक्सेप्टेंस कैसे? एक एक चीज है कि मान लेते हैं कि एक मछली है, वो बंदर को देख लेती है एक दिन, और वो ना दिन भर सोचती रहती है कि यार मैं बंदर क्यों नहीं बन पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं पेड़ पे चढ़ सकती हूँ, क्यों क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ जंप करने की, इतनी इतनी ताकत लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं बंदर क्यों नहीं बन सकती। ओके, हम्म, you need to identify who you are and accept that, right? सी अगर आप once again it comes back to secure attachment style or insecure attachment style. So एक तरफ ऐसा है कि you are the kind of person, let's say अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि you meet somebody and you two are very different people, but you like the guy and the guy is not that much into you because from his point of view उसको लग रहा है कि नहीं, this is not what I want, right? But you are so much into it कि आपको वो नो सुनाई ही नहीं दे रहा, तो आप बस अटक गए हो कि नहीं ये यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो यू आर फीलिंग हर्ट। तो यहाँ पे आप खुद में तो कुछ चेंज कर नहीं रहे हो, ये तो इम्पोज करना हुआ किसी को कि मतलब जबरदस्ती हो गया कि नहीं तुम यू एक्सेप्ट मी, यू नो, तो ये तो इम्पोजिंग हो गया। हाँ लेकिन अगर if you're identifying ki the gaps that I'm identifying, so maybe there are certain things ki uh, let's say for example a guy rejects you on the basis of looks, hmm? कि हाइट छोटी है या हाइट बहुत बड़ी है या ये है वो है, ठीक है, उसका आप कर क्या सकते हो? there are certain things you cannot alter, there is nothing you can do about it. For example, the color of your skin, the family you are born in, the country you are born in. There are certain things जो just हैं, so non negotiable हैं, क्योंकि
इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो. दिस इज हाउ इट इज. सो इफ द पर्सन likes it. If the person doesn't like it. That's where things are. तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है. ऑप्शन क्या है? अगर मान लो कि आपकी हाइट बहुत लंबी है और वो बंदा ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ हाइट तो बहुत लंबी है, तो आई वांट समवन विद शॉर्टर हाइट. ऑप्शन क्या है आपके पास? सो इट डजंट मैटर, द पर्सन इज वेरी क्लियर, एंड दैट्स इट. बट हाँ, इफ देर आर सर्टन इनकम्पैटिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस और लाइक्स डिसलाइक्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं. तो लेट्स से somebody is very unhygienic. तो you meet a guy and that guy is very unhygienic और आप उसको उस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हो. बाकी सब तो बहुत ठीक है, लेकिन यू आर वेरी अनहाइजीनिक. आई रियली कांट पुट अप विद अ गाय हु इज अनहाइजीनिक. अगर वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट इन द मोड कि टेक इट और लीव इट, और वो इस बात से हर्ट भी हो रहा है कि हाउ कैन यू रिजेक्ट मी. उसको अपने ऊपर कुछ नहीं करना है, कोई अपने ऊपर काम नहीं करना है, अपने आप को सुधारना नहीं है, अपनी गैप्स को कुछ नहीं करना है, बस बस रोना है कि मुझको रिजेक्ट कर दिया. इसमें आपका क्या लेना देना? You're being very honest with the person. If the person values this, they will get up and do something about it. And if they are doing something about it, good. कि यहाँ पे कुछ आगे बात बन सकती है कि आपने कुछ फीडबैक दिया है, मेरे को ये चीजें पसंद है, ये चीजें पसंद नहीं है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और पर्सन इज इम्प्रूविंग एंड शोइंग कि हाँ, दे आर विलिंग टू लुक एट दैट. क्योंकि ठीक है, फॉर मेनी गाइज व्हेन दे आर लिविंग एज बैचलर्स एंड ऑल दैट, वो कैसे भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑल दैट. तो एक टाइम आता है जब उनको लगता है हाँ ठीक है, ये अगर ये चीज आगे आ रही है, आई डोंट वांट टू लूज दिस रिलेशनशिप, दिस वुमन, शी मैटर्स, और उसके लिए इफ आई हैव टू स्टेप अप एंड आई हैव टू गेट बेटर इन दिस एरिया, देन व्हाई नॉट. तो मेरे ही अच्छे के लिए भी है, एंड आई गेट टू सेव दिस रिलेशनशिप, तो हो ही सकता है. लेकिन कोई चीजें जो नॉन नेगोशिएबल हैं कि कि किसी का कुछ फाइनेंशियल, कि वो इतने पुअर बैकग्राउंड से है या वो बहुत रिच बैकग्राउंड से है, ये कुछ चीजें जिनको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन क्या है वहाँ? करेक्ट. या तो वी हैव टू सी कि किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. हम इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते हैं चीजों को. वी हैव टू बी मोर रियलिस्टिक कि what is the thing, what is it that is being said. So rejection is for a certain point, and whatever it is, we have to honor that. We have to honor the choice of the other person. If this is not what they want, then this is not what they want. And I'm sure कि कल को आपके ऊपर कोई ऐसा इम्पोज करेगा अपने आप को, और आप उसको लाइक नहीं करते हो, और वो इम्पोज कर रहा है, एंड देन दैट पर्सन इज फीलिंग बैड कि आप क्यों मान नहीं रहे हो. आई एम श्योर यू विल ऑल्सो नॉट लाइक कि आपसे वो फ्रीडम छीन ली जाए. तो फिर दूसरे की भी मत छीनो ना. या थैंक यू. Yes, Deepti, your hand is up. You want to say something? Yes, like Ishita talked about self-worth. So this I feel that when this rejection kind of a thing happens, matlab, it often lets you doubt your own self-worth. Matlab, when we talk about relationship only, thing is like कि, if we say कि हाँ, this is something that we need to work upon ourselves. But there are obviously things that in the other person also, there are things that you also find offensive, or maybe you want them to work upon. But if you identify that you need to work upon this, but the other person does not feel that there is wrong something that they need to work upon, and they simply when you convey and the other person is like ki, no, there is no fault in me, or they don't want to work upon themselves, and they simply reject you on this basis that see, this is the issue with you, and sorry, this does not work. So this often leads to a this like self-worth doubt in your own self. वो अगेन लाइक वी सेड कि it could, if you are operating from an insecure attachment style. Yes. So I would continue to say this thing कि हर सिचुएशन के
दो रिएक्शंस हैं, दो रिस्पॉन्सेज हैं. The response can come from, if you're operating from an insecure attachment style, then what you are talking is generally what a person in an insecure attachment style would respond from. Person in a secure attachment style will not respond like that. That's all what I can say in this thing. So yeah, your point is valid, but it's coming from a space of insecure attachment style. And a person operating from anxious preoccupied style or fearful avoidant or dismissive avoidant, not dismissive avoidant, but yeah, definitely anxious preoccupied person will feel this way. No, but like you said, that a person with a growth mindset understands that they need to work upon themselves. But the thing is, I mentioned that I know there are certain things that I need to work upon. But my experience uh, so far, my previous experience makes me like I believe in open communication. And if the other person is like, "Ki, I cannot give clarification on each and everything." So this is something like we can sort it out, or you cannot हाँ, simply say that I cannot give a so वही मैं बोल explanation रहा on हूँ everything. कि अगर वो जो आप बता रहे हो उससे यही समझ में आ रहा है कि the person on the other side operates from an avoidant style, and could be a dismissive avoidant, could be a fearful avoidant, operates from an avoidant style, and you operate from an anxious style. क्योंकि ये एकदम like this is like match made in heaven है. In toxic relationships, this is a match made in heaven. One partner is avoidant, the other partner becomes anxious. So this is the equation. You are you're giving examples to confirm it even more. Okay, right. हाँ, तो अवॉइडेंट स्टाइल वाले लोगों का टैक्टिक्स ही उनको उनको पढ़ना ही नहीं, उनको अवॉइड करना है कॉन्वर्सेशंस, उनको करना ही नहीं है. एंशियस प्रीऑक्यूपाइड पर्सन बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स इन देयर ओन माइंड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि इसको मैं इंटरप्रेट कैसे करूं, इसका मतलब क्या है, एंड ऑल दैट. सो दे बिकम वेरी एंशियस एंड ऑल दैट. सो एंड बट सामने वाले बंदे का क्या होता है कि मतलब दे डू नॉट वांट टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन, मतलब कुछ गलत करके भी दे डोंट वांट टू आंसर तो एनीथिंग, वही दे तो डोंट अवॉइडेंट वांट टू. स्टाइल है ना, If I ओके, was उसी को ही in तो place of अवॉइडेंट you, स्टाइल मतलब बोलते हैं Aditi, ना. I would disrespecting you as in listen. I not would listen to answering what your answers. Akama is saying rather than interrupting every now and then. Sorry, I didn't सो get it. आई एम सेइंग कि I'm sorry. I'm हाँ, सो sorry. आई एम I interrupted in between. So I am saying, Vitti, ki this what you are describing is Mm-hmm. is a description of an avoidant person. So this person you are describing operates either from dismissive avoidant style or fearful avoidant style. और और आप जितनी भी जो जितनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो और कंफर्म ही हो रहा है कि यही है. तो Okay. उसमें क्या होता है कि a toxic relationship has these two things as ingredients. Ki one partner often operates from avoidant style, the other partner operates from anxious style. So you are operating from anxious style. आपकी आवाज में, आपकी बात में, आपकी एनर्जी में ये चीज काफी एविडेंट है कि My experience कि have been such आप that I. एंशियस हो. Mm-hmm. हाँ हाँ, so you are quite anxious and all that, and you are trying to figure out कि क्यों हो रहा है, क्या आप कोई दोनों तरफ से आपको ही खेलना पड़ रहा है कि आप कोई क्वेश्चन भी आप ही पूछ रहे हो, आंसर भी आपको ही फिगर आउट करना है, दूसरे को तो खेलना ही है, दूसरे को तो अवॉइड करना है. तो communication is not the key here. Communication is never the key. We put too much um, stress on this topic of communication. Understand that communication is never the key, comprehension So is the how key. does it work? You What is the can key? communicate as much comprehension, you can Okay. communicate as much as you want. If the other person is not able to comprehend, it's not going to work. Mm-hmm. हाँ, आपको अगर आपको अगर एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, अगर एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स सिखाने के लिए बोला जाए तो क्या कर ले, कम्युनिकेशन क्या कर लेगा इसमें. Mm-hmm. कितना भी अच्छा कम्युनिकेटर हो, दुनिया का बेस्ट कम्युनिकेटर आप ले आओ, अगर एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को दुनिया का बेस्ट कम्युनिकेटर बना दें और उसको बोलेंगे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को अभी 12th स्टैंडर्ड का मैथ सिखाओ, नहीं सिखा सकता है.
बिकॉज थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे में वो कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी ही नहीं है। I understand. Mm-hmm. तो जब कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी ही नहीं है किसी के अंदर, तो आप कितना कम्युनिकेट कर लो। तो जो इंसान अवॉइडेंट स्टेट में है, उनको कॉम्प्रिहेंड करना ही नहीं है, कर लो आप कितना भी कम्युनिकेट, आप But अपनी but this एंजाइटी ही has बढ़ाने वाले हो। but this has made me actually doubt my own self-worth. I am often made to हाँ believe कि मैंने ऐसा क्या किया, मतलब this does हाँ, come तो to my यही तो, mind every now and then. करेक्ट। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एंशियस प्रीऑक्यूपाइड। So how हैव do यू we work? अटेंडेड अनस्टक योरसेल्फ वर्कशॉप No, येट? no, no, I have not yet done it. हाँ हाँ, जब व्हेन यू आर रेडी यू अटेंड दैट, क्योंकि इस पे काम किए बिना तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। Okay. दिस इज द क्वालिटी, दीज आर व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग इज, सी, हम सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो our way of working is to identify patterns and work on patterns. हम इंसिडेंट्स पे वर्क नहीं करते हैं। तो Mm-hmm. you tell me incidents and I am going to listen to those incidents to identify patterns. एक बार पैटर्न क्लियर हो गया, उसके बाद आपके इंसिडेंट्स में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो मेरे लिए यूजफुल है, क्योंकि इंसिडेंट्स तो आपके पास बहुत होंगे। आपको अगर मैं बैठ के बोलूं कि आप अपना बताओ, तो बहुत बहुत सारे होंगे। आप 2-4 घंटे तक मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स बता सकते हैं। Yes. पर पैटर्न तो मुझे ये 10 मिनट की बात में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। वो आप मेरे को 4 घंटे बैठ के इंसिडेंट्स भी बताओगे तो इट्स ओनली जस्ट गोइंग टू रिकन्फर्म व्हाट आई हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड। तो अब हमको पैटर्न को एड्रेस करना है, इंसिडेंट्स को एड्रेस नहीं करना है। इंसिडेंट्स तो हो गए, वो तो खत्म, वो तो पास्ट में है। Mm-hmm. Nobody can go back and do anything about the incidents. What we want to do is we want to fix the pattern so these incidents don't repeat in future. Okay. So pattern को address करना है। पैटर्न आपको यही हाईलाइट कर रहा हूँ कि your partner is coming from an avoidant style, you coming from an anxious preoccupied style. Now when you address anxious preoccupied style, तो एंशियस प्रीऑक्यूपाइड स्टाइल एक वो ब्रांच है जिसपे ये सारे फ्रूट्स लटके होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, लो कॉन्फिडेंस, ये सारे फ्रूट्स लटके उस। But this was not since the beginning. This has happened over the span of some time in my हाँ like failed marriage and everything. हाँ, ये ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है कि ये, क्योंकि ये चीज अभी आ रही है बाहर, अभी आई है बाहर। बट इफ यू प्रोब डीपर यू विल देन फाइंड कि सीड्स तो उसके बहुत पहले सो हो चुके थे। दैट इज द रीजन व्हाई यू फेल्ट अट्रैक्टेड टू अ पर्सन लाइक दिस। Okay. कप तो आपका बहुत पहले फुल हो चुका था, बट वो कप छलकाने वाला कोई आया नहीं था, अब आ गया। तो अभी ऐसे लग रहा है कि कप यहाँ छलक रहा है और यहाँ गिर रहा है, तो अभी लग रहा है इनकी गलती है, इनकी वजह से कप छलक रहा है। लेकिन भरा हुआ कप तो आप बहुत पहले से लेके घूम रहे थे, बस उसको बहुत संभाल के चल रहे थे, या कोई आया नहीं था उसको छलकाने वाला। Okay. One thing I wanted to add, listening to Dipti. So Dipti, this is not directly linked to you, but because I guess Payal also was talking about this, this feedback thing before. So I wanted to add a point for the rejection thing. So, in case you're somebody who has gotten rejected, then first of all, of course, you will have to work on yourself, like to be able to accept that rejection in a more constructive, in a more positive way. And how do we take feedback from people when people are not, willing to share their feedback with us? So there is always a reason why people are unwilling to share their feedback, right? So now, giving them assurance, giving them, creating the safe space for them, that they will not be questioned, you will not be crying about it, you will not be questioning their decision, you just want it, so that because you want to improve yourself. So you first have to come to a space where you're not asking this question out of hurt or asking this question to create some drama.
You're asking this question to understand so that you can grow from this situation, learn from it, and see if there's anything that you would like to do. So there could be two scenarios. Things could be like, for an example, we discussed about things like किसी की height लंबी है, किसी की height छोटी है, things which we can literally do nothing about, right? तो उसमें समझ में आता है, many a times we realize that the reason why people have been rejecting us actually has nothing to do with us, right? And most of the times you will find such reasons that why they rejected us is because they have their own fears, they have their own choices, they have their own preferences, they have their own stories. So the thing is that when we are in an insecure attachment style, the thing is that we give meaning to things based on the way we have experienced things, right? So हम ये कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम सामने वाले से समझें, ये करें, और हम पहले ही एक स्टोरी बना लेते हैं कि he must have rejected me because of this, he must have rejected me because she must have said this because of this, and because while not even trying to understand कि क्या reason होता है, while the reason could be absolutely may have nothing to do with you, and in case it has anything to do with you, right? So for an example, somebody says that नहीं तुम पूरे टाइम रोती रहती हो और तुम पूरे टाइम रोते रहते हो, you are emotionally unavailable, or you are always in a blame mode, victim mode, you're always cribbing, crying. If in case that person is really honest, right? And for that you have to make them like feel really really safe, क्योंकि हम, like in the beginning I was talking about the fundamental need of this love, acceptance, connection, and it's natural and normal to feel that हमें दूसरे को hurt करना अच्छा नहीं लगता, because again we have covered this in great detail कि क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है that जो false lies हैं, they are better because they make people feel good rather than the truths. But कोई भी हमें ये नहीं सिखाता that there can be a good way to express our truth and listen and accept other people's truth. कोई भी ये नहीं बता रहा है, कहीं भी ये नहीं है to where people could teach us how to express and how to receive the honest feedback, how to receive the truth, right? So create that safe space, bring that the other person into, matlab you will have to win the other person's confidence, and you will not be able to win the other person confidence जैसे ही किसी ने बोलना चालू किया, and again you are in the same mode, right? जिस मोड में आप पहले थे, so उसके लिए आपको पहले खुद काम करना पड़ेगा, so that you are in that space where you can take that feedback, right? In that space where you are genuinely willing to work on yourself in case something comes up, right? Or maybe you come to your realization कि इसमें तो मेरा कुछ था ही नहीं, right? So in either of the ways, we have to be like really become comfortable enough to listen to the truth. And also it's very important, ये जो चीज हमें सिखाई जाती है about false lies and all that, this actually does not help anybody, right? ये सोचना कि because I don't want to hurt other people, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा साउंड करता है ना कि देखा मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, राइट? देखा मैं कितना अच्छा हूँ, देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, देखा मैं दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहती. बट उसमें हम ये चीज देखना भूल जाते हैं दैट इट इज कवर्ड विद द ओन लेयर ऑफ आवर ओन हिडन एजेंडा, जहाँ पे हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितने अच्छे इंसान अपने आप को प्रूव करते हैं, rather देन ये कि वो ट्रूथ शायद सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है. सो हम maybe, so for an example, I guess Anupama was sharing their story that she took feedback and then she improved and then she's in a better job. Maybe let's suppose somebody has a bad personality, right? Or somebody is not actually needs to improve on something. And when you say this thing to him, of course they're going to get hurt. But you know why you are saying that, right? You can even tell them that I know this may sound like really like this, but trust me, I have good intention on this. Because hurt तो उनको ऐसे भी हो रहा है. अगर आपने उनको ना बोल दिया and you have ghosted them or you have not giving them a reason, they are anyway getting hurt. So at least you can make that hurt useful for them by telling them your honest feedback कि हाँ, right? So इसके लिए हमें भी अपने साथ honest होना पड़ेगा कि हम इन चीजों में ना अपने आप को
ये अपने आप ये मास्क करना बंद कर दें कि हमें दूसरों को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता, ये नहीं करना। हमें दूसरे बहुत बाद में दिखते हैं, हमें सबकॉन्शियसली सिर्फ हम खुद दिखते हैं, राइट? सो दैट वे वी रियली नीड टू come to that space and we will be able to come to that space जहाँ पे हम खुद इस चीज के लिए capable हो जाए, where we are able to receive the truth, right? So that then we can speak the truth. Yeah. So that's just what I wanted to add. So, Anamika, the thing which you just said, I just want to add on something to that. Sorry to interrupt in between. I just wanted to ask that you just said that we should share the true feedback because in any way we are hurting the person, so that should be useful for them, which is true. But what if that feedback is coming from the person who himself or herself has some insecurities? Like, for example, if I take example of my mother, she has some kind of biasness towards the skin color. Like because she is fair, she certainly like the girls or the people who have fair skin color instead of the people who have dark skin. So sometimes she gives me I fall in between of kind of that. So sometimes being a mother, she gives me the feedback, okay, you are not looking good or you are looking dark skin, do something this and this and this. So in that case, now it is my skin color, I cannot do anything, right? But she is being my mother, she is giving me the true feedback, which is suiting right to her. But now how do I take it? Because I don't know. अभी वो मेरी मदर है, मैं उनका नेचर जानती हूँ, ठीक है, आई It नो is कि उनका not नेचर है, a बट अगर true ऐसा किसी बंदे से आ रहा है जो मुझे नहीं पता ये उसकी इनसिक्योरिटी है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, it is मुझे तो not ये a true लगेगा ना कि वो feedback. ट्रू बोल रहा है. Wait. No, it is not a true feedback at all, because rejection is not validation. Rejection is not validation. ठीक है, तो Can you जब हम elaborate? हाँ, तो वैलिडेशन का मतलब होता है व्हेन वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स कि अच्छा, अगर सामने वाले ने बोल दिया कि यू नो यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, तो ये अब सच हो गया एंड ये अब पत्थर की लकीर है और ये अब ऐसा ही रहेगा, एंड दैट पर्सन हैज वैलिडेटेड दैट थिंग. So what your mother is saying, what the other person, when they are giving you a feedback, you also have to, again, if you have reached that space where you're able to take the honest feedback, but again it has to get filtered कि उस feedback को हमको उसमें कोई ऐसी चीज वो डिमांड कर रहे हैं या बोल रहे हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं. क्योंकि अगर वो ऐसी चीज पे फीडबैक दे रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो मैं वही चीज जो पहले बोल रही थी ना, कि फिर तो यही बात हो गई कि एक मछली है, वो तैर रही है और बाहर खड़े होके ना सब उसको गालियां दे रहे हैं कि तुम देखो कैसे बंदर की जैसे पेड़ पे नहीं चढ़ सकती. ये 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 कैसा फीडबैक है? ये फीडबैक नहीं है. अभी पलक, अभी कुछ देर पहले ही हम ये बात कर रहे थे कि दो कैटेगरीज में हम देखते हैं चीजों को, तो तुम वो सुन रही थी वो कॉन्वर्सेशन, वो जब मैं बोल रहा था? Yes, सत्कर्मा, हाँ मैं सुन रही हूँ. तो ये हाउ इज दिस वैलिड, ये जो तुम पूछ रही हो हाउ इज दिस वैलिड, पहली बात तो फीडबैक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द टर्म फीडबैक इवन मीन्स? कि मेरे को कोई कुछ बता रहा है तो मैं उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ. अगर मेरे को बार बार कोई यही बता रहा है कि मेरी हाइट इतनी क्यों है, मेरी हाइट इतनी क्यों नहीं है, वो कैसे फीडबैक है? वो तो ओपिनियन है किसी का. हाँ, ओपिनियन है, आई एग्री, लेकिन वो उस चीज से फिर हम मतलब सेल्फ एस्टीम पे आ जाती है वो चीज, फिर सेल्फ डाउट होने लग जाता है. बिकॉज हम डिफरेंट शायद, हाँ वो क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये फीडबैक सही है या गलत है. बट अगर सामने वाला ऐसे रीजंस देता है तो वो फिर अगेन ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड कि हाउ टू डील विद दैट. बट हाँ, वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिजेक्शन इश्यूज हो जाते हैं उससे. अभी किसी के बोलने पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना. तो अम, तुम अगर इस एंगल से आ रही हो कि उनके बोलने से मुझे ये हो जाता है, तो अगेन आई विल से टू यू कि तो ये तुमने बटन उनको दे ही क्यों रखा है कि वो बटन दबाएं और तुम्हारा ये स्टेट चेंज हो जाए? तुम कर क्या सकती हो इसमें? पहली बात तो जब क्वेश्चन अगर अल्टीमेटली यही आ रहा है कि कोई तुमको कुछ बोल रहा है और उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो, और उनके बोलने पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने सुनने पे और अपने प्रोसेस करने पे तो कंट्रोल कर सकती हो ना. ट्रू.
हाँ, वो क्यों नहीं है? तो जो तुम्हारे कंट्रोल में चीज है उस पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे कि वो क्यों बोलती रहती हैं, उनको बोलना बंद कर देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। सब सही है। आई एम नॉट सेइंग नो टू योर एक्सपेक्टेशन। आई एम जस्ट सेइंग कि वो हो तो नहीं रहा है ना, लेकिन हम्म। और तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकती उस चीज को। पर तुम क्या सुन रही हो, क्या प्रोसेस कर रही हो, इस पे तो तुम्हारा है कंट्रोल या नहीं है। हाँ ट्रू है, बट वो तुम किसी को हम्म। तुम किसी को जहर सर्व करने से रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन अपने आप को खाने से तो रोक सकते हो, या वो भी नहीं रोक सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी मतलब धोखा खाने के बाद सीखा है, तो थोड़ा सा शायद इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगे, क्योंकि बीइंग पेरेंट्स बचपन से वही बताते आए हैं, वही रिजेक्शन या वैलिडेशन करते आए हैं, तो हमें तो लगता है कि लाइक साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, हमारे भले के लिए कह रहे होंगे, तो वो चीजें आई नो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? हम्म आई एम ट्राइंग माई बेस्ट आपके किसमें ट्राई क्या गाइडेंस में। करना है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ट्राई ये करना टाइम है कि खुद लगेगा को किस चीज अफेक्ट में। ना करे। ट्राई ये करना है कि उनकी चीजों को मतलब इस चीज ये चीज मैं समझ गई और हूँ जो आप बोल रहे हो। अफेक्ट ना करने के लिए पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग फर्स्टली तो, कि आप हम्म, जो बोल रहे हो उस चीज की नहीं, अंडरस्टैंडिंग डीपली तुम होनी समझ, नहीं नहीं नहीं, तुम इसको ना कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड वे में देख रही हो, और तुम इसको कुछ ज्यादा ही प्रोसेस ओरिएंटेड बना रही हो। Akarma, तुम can I अभी भी answer तुमको this question? आपका ये क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट। अभी अभी मैंने तुमको ये बोला कि कोई तुमको जहर सर्व कर रहा है, तो तुम्हारे पास तुम क्या है, तुम जहर खाए जा रही हो और ये बोल रही हो कि हाँ मेरे को ना अपने आप को बिल्ड करना है ताकि मैं इसको डाइजेस्ट कर लूँ, इसमें स्ट्रांग बन जाऊं और मैं ये कर लूं। और मैं बोल रहा हूँ वाई वाई आर यू ईटिंग इट? वाई आर यू नॉट जस्ट रिजेक्टिंग इट एट फेस वैल्यू इटसेल्फ? और रिजेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ बोलना है, जस्ट डोंट रिसीव इट। तो what is stopping you from not receiving it? What is stopping you from saying to yourself ये बकवास है, ये बात? अगर मैं मतलब ये चीज मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, बट ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, ये रिजेक्ट करना चीजों को, वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह जाती है, मतलब कैसे एंड सॉरी अगर मैं वापस वही चीज रिपीट कर रही हूँ, तो बट वो प्रैक्टिकली एकदम ऐसे रिजेक्ट करना हो नहीं पाता है। जब कोई बोलता है तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं ओके आई नो वो उनका ओपिनियन है और ऐसा ये नहीं हो सकता, ये सब सारी चीजें, बट वो कहीं ना कहीं फिर भी दिमाग में रह जाता है और वो घूमता रहता है, फिर उस पे काम करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, yes Anupama, you wanted to say something. Mamta, you are not audible, you are on mute. Yeah, Karma, I just wanted to add on this point. Like, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। अगर हम सांवले हैं तो इट्स ओके, उसको हम कितना भी कुछ भी उपटन लगा ले, कुछ भी लगा ले, वी कांट चेंज। अगर मेरी हाइट इतनी है वो इतनी ही रहेगी, मेरी कुछ भी करने से मेरी हाइट नहीं बढ़ जाएगी। अगर मैं गोरी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, वो मैं हूँ। अब कोई दुनिया मुझे कह ले कि तुम अच्छी हो बुरी हो, ठीक है भाई, मैं हूँ, अपने लिए हूँ। किसी और को मेरे किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस मुझे जब तक प्रॉब्लम ना हो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हजार लोग हजार बातें कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं वही पड़ेगा अपने तो ऊपर। वही तो मैं भी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जहर हाँ इसको वही कोई बाहर पलक वाला नहीं सिंपली दे रहा है, ये वो चीज। खुद ही दे रही है। वो हाँ ये खुद ही अपने आप सिंपली। को दे रही है। हाँ ये चीज समझो कि आप जो भी हो जैसे भी हो, आप पहले खुद को एक्सेप्ट करो, फिर ये कोई कुछ भी बोले हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप कंट्रोल ही हाँ, नहीं कर सकते। यही तो अकर मतलब से समझा रहे हैं कि हाइट वेट कॉम्प्लेक्शन जैसी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ वेट कंट्रोल कर सकते हैं, हमें वेट लूज करना है, वेट पुट ऑन करना है, वो उस पर हम एफर्ट डाल सकते हैं। लेकिन हाइट कैसे बढ़ाओगे? कॉम्प्लेक्शन अगर कम है, अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है, अगर एक सांवले हो, क्या कर लोगे? कितनी भी क्रीम लगा लो नहीं गोरे हो सकते हो, कितने भी उपटन लगा लो कुछ नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करो उस चीज को, आगे बढ़ो।
खुद में ये कॉम्प्लेक्स लाना ही क्यों है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। जिसको जो बोलना है बोलने वाला बोल के चला गया, अपने अंदर क्यों इस चीज को घर करके बैठे हुए हो? एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। जरूरत नहीं है इसको एक इतना शील्ड तो खींचने की। बनानी पड़ेगी ना, शील्ड तो बनानी पड़ेगी, बिना शील्ड बनाए तो नहीं होगा ना। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तुम बिना शील्ड बनाए अगर उसको प्रोसेस कर रही हो और फिर ये बोल रही हो कि टाइम लगेगा, तो टाइम तो बहुत लगेगा। और अगर यही चीज है, ये आज भी हो सकती है, इस समय भी हो सकती है कि Can व्हेन I यू add से here कि something? आई एम व्हाट आई एम। यस ममता, गो अहेड। Akarma, Can I add because something here? since it's a personal testimony, give me a minute, Bina. Since it's a personal testimony, that's why I kind of want to, add in a little. Okay. So I've been listening to the whole conversation over here on rejection and बहुत सारी चीजें जहाँ पे self worth की भी बात हुई and बहुत सारी चीजें हुई. So now I'm a person who's dealt with these issues like big time, and I've been working on this for like more than a decade now. Okay, and I can totally understand what this girl is saying. Sorry, I missed the name. Okay, I think Palak. Palak, तो Palak. वो ना, हाँ Yes, पलक, yes. कि ये आसान नहीं है और ये, एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सीरियसली, बिकॉज अभी मैं आपको बताती हूँ मेरा चाइल्डहुड. सो माय कलर, let me tell you, I'm this dark, you know, mocha, you see, mocha color chocolate coffee mix, and I love it. Trust me, I love it. That is the best thing about me. And since childhood, I've had issues of abandonment. I was this typical anxious, preoccupied candidate. And I made those heaven made matches also. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. हर बार क्या होता था मालूम है, बचपन से लेके हर बार ये होता था, मैं गंदी हूँ और वो अच्छा है. तो हर चीज के मीनिंग होते थे ना, कि ये वाला अच्छा है वो बुरा है. तो गोरा अच्छा है और ये मोका कलर बुरा है, चॉकलेट कलर बुरा है, लंबा अच्छा है, सुपीरियर है, छोटा इंफीरियर है, मोटी है, पतली है. तो वो जो ना बहुत सारे अच्छे और बुरे के मीनिंग्स आने लगे, और वो अच्छे और बुरे के मीनिंग्स आते थे ना, तो वो ट्रिगर होता था. लो सेल्फ एस्टीम ट्रिगर होता था, नॉट बीइंग गुड इनफ ट्रिगर होता था हमेशा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अच्छी हो जाऊं. ओके, तो Yes. वो सारे एक एक नई नई चीजें ढूंढ के निकालते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि अच्छी हो जाऊं. आई टू टेक, अभी रिजेक्शन वाले पॉइंट पे मैं जा ही नहीं रही हूँ. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग ऑन द रिजेक्शन पॉइंट. उसके लिए भी है बहुत सारी चीजें बताने के लिए, बट दिस ओनली आई थिंक दिस विल हेल्प. सो व्हेन आई रियली स्टार्टेड वर्किंग, I started to understand. I mean, since little bit of spiritual part of it and nature rather, not spiritually. जब मैं नेचर को देखती हूँ, ओके, एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. एंड व्हाई नेचर का रेफरेंस, बिकॉज यू एंड आई, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द नेचर, है ना. देयर इज अ क्रिएटर, वॉट एवर इट इज. तो अगर एक मैंगो ट्री है और एक कोकोनट ट्री है, ओके, इमेजिन अ मैंगो ट्री ट्राइंग टू बिकम अ कोकोनट ट्री. oh my god, it will have to shell out all its branches, है ना. और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता था, ये ज्यादा अच्छा है, ये बुरा है. देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि हर एक चीज का अपना प्लेस है. चाहे एक पेड़ टेढ़ा है, एक पत्ती लंबी है, एक पत्ती ऐसी है, यू नो, everything is different and unique, and that does not make it beautiful or ugly. ये हमारे अपने परसेप्शंस होते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है और ये बुरा है. ठीक है, तो अगर मेरे सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, तो मेरा सेल्फ एस्टीम इशू में मेरे को बोलता है कि मैं कैसे अच्छी बन जाऊं. तो इसके लिए अच्छे बनने के ऊपर ही सारा फोकस हो जाता है. तो मुझे रिजेक्ट भी मत करो, मुझे काली भी मत बोलो, मुझे मोटी भी मत बोलो. वो सारी चीजें हम सेल्फ लव को बहुत अलग अलग एंगल से तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके यूज करते हैं. मुझे सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब मैंने ये अच्छा और बुरा निकाल दिया. सीरियसली, अच्छा और I बुरा निकल गया ना, तो बहुत ही मतलब लाइफ ही आसान हो गई. I मैं would और like to अच्छी add मैं बन on. सकती हूँ. give me a minute, I'll finish this. मैं बहुत अच्छा मैंगो ट्री बन सकती हूँ. मेरे को कोकोनट ट्री बनने की जरूरत नहीं है. उसके लिए वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज द क्रिएटर हैज क्रिएटेड मी लाइक दिस, है ना. ये जो बोलते हैं ना सबकी एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, कभी कभी ना एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में सवाल ये
लेकिन मुझे छोटा क्यों बनाया, मेरे को लंबा क्यों बनाया, मेरे को ऐसा क्यों बनाया, एक्सेप्ट कर लो, अब क्या ही कर सकते हो, क्या ही कर सकते हो। तो अगर मुझे फील गुड ही करना है तो मैं ये कर सकती हूँ। ये मेरा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, इट वर्क्स फॉर मी। Okay, I don't know whether it's a right prophecy or a wrong prophecy, but it's a self-fulfilling prophecy for me, and it definitely works that everything and everyone has a place. Okay, nothing becomes good or bad, या तो मैं या तो other person. Now how do I link it to rejection also? When I say no to somebody, that doesn't become bad. और कोई मुझे ना बोलता है तो मैं खराब नहीं हो जाती, यू नो। मेरी बेटी भी है, 12 साल की बेटी भी है। ओके, एंड मैंने बहुत रिजेक्शन देखे हैं और गंदे गंदे देखे, मतलब आई हैव लाइक अ वेरी ग्लैमरस लाइफ स्टोरी, वेरी वेरी ग्लैमरस। So I'm not just getting there, but I'm saying that this sunset is the sunrise is the most amazing thing in the world, and half the world is sleeping, and some of them choose to go for sunset, है ना? Some love the sunset, some love the sunrise. दोनों में से कुछ भी खराब नहीं होता है। कोई रात की रानी है, कोई सुबह की दीवानी है, whatever, you know, something like that. तो मुझे ऐसा लगता है कि I have my own place, you have your own place, you are good, I am also good. तो जब ये बात अपने को समझ में आने लगती है ना, और हम अपने अंदर से जब हम खुद को थोड़ा कम कम महसूस करते हैं, आई एम श्योर अभी थोड़ा सा कम कम महसूस हो रहा होगा, है ना? Actually, थोड़ा yes. थोड़ा सा कम कम महसूस हो रहा है तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। And ये जो कमी होती है ना, ये जो खालीपन होता है ना, ये अपने को भरना होता है। एंड दैट्स वेयर यू नो दिस होल सेल्फ लव थिंग कम्स, कि मैं अपनी बेटर वर्जन बन जाऊं। और इसमें अगर जो प्रॉब्लम आ रहे, देन वी स्टार्ट सीकिंग यू नो थेरेपी, काउंसलिंग, हेल्प, और अंडरस्टैंडिंग योर अटैचमेंट स्टाइल एंड स्टफ लाइक दैट। It's a long journey, but it's beautiful. That's all I can Yes, say. yes. It's a It's a beautiful good journey. perspective. Thank you so Yeah, much, Mamta. Palat, I would like to put in a different perspective because this relationship you meant is with your mother. And for any child, being I'm 50 today, in spite of being 50 or 5 or 50, irrespective of the age, parents matter the most in any individual's life. And that relationship influences heavily, heavily, right from childhood. Because probably I'm assuming from what you told that you've been listening to that from your mom since maybe you were young. That has created a feeling that you are not that worthy to receive 100% love from your mom. There is some gap because of which she keeps on telling you. And that gap is you're trying to fill that gap with other people in your life. You might try to put in the filter that it doesn't matter, it's okay. But with your mom or with your dad, with parents especially, it's a very, very delicate relationship where um, irrespective of putting in how many filters or how many affirmations or how many whatever you may tell yourself, that gap you will try to fill. Or even if they pass away whenever at whatever age, that gap will always be there. So I would like to put in a different perspective to look at your mom. Only this what I'm saying is only with your mom, not with others. Is look at her with empathy, because she's also coming from a place where she was made to believe that. I'll give you an example of my 5-year-old son. He one day we were passing from the car and he saw one or two dark colored skinned boys outside on the street, and he assumed they are poor, they're beggars. And he told me, Mom, see, look at them, how they are so poor. I said, what makes you think that? And he said, because their skin is dark. So this is his observation. Nobody taught him, right? This is just one. And then I had to explain him that color is not based on which you need to judge or interpret someone or somebody or a situation. This is just one example. So with your mom, be more empathetic, because she's coming from some place you don't even know. When she was young, what she was taught, what she experienced, we don't know that, right? Unless she True. expresses to you. So be more empathetic and look at her with empathy, a little bit of, I wouldn't say forgiveness, empathy is the right word, because um,
If it is hurting you, you need to forgive her. But if it is not hurting you, it just, makes you feel or think something, be empathetic that she is coming from a place where she has learned that it's absolutely okay for her. She is living with that. You can't change her, but you can change your perception that she's coming from a place where she's learned and taught. She's been taught that will help you empathize with her when you see her, that she's coming from a different place. She's not trying to judge you. So her love is not being becoming less for you by just saying that. Her love is as it is. It's just that perception what she has, either it has been given to her or it has been taught to her, and it was not her fault. So this True. perspective of being empathetic with her, looking at her, that she's coming from a different place, you don't need to take it personally. She's just expressing. As I told you, my son made an observation, and maybe, in the time when they were young, those were the perceptions, and everybody believed that. Today things have changed. So just it's absolutely okay. Be a little bit more empathetic towards her, and then first, whenever something comes like that, be more empathetic towards that person. Then you can get your perspective of working on your own self. Because unless you be empathetic with that person, you're going to keep them even more close and close, and those comments will become more personalized to you unless you're empathetic to them. Being empathetic helps you create a little bit of distance where you can think for yourself. That's it. Thank you. Yeah, Veena, thank you for this wonderful perspective. And Thank thank you, you. Mamta, too. I actually feel it's thoda come now. And thank you. I will try to implement it. I think Unstuck will really help you. Unstuck will I really have help done that. you. I have already Yeah. done that. Yeah. तो थोड़ा और करना पड़ेगा, आगे वाला भी करना पड़ेगा. हाँ, एक्चुअली What बचपन से वो Veena said, हाँ. कंपैरिजन माइंडसेट जो हाँ हाँ, go on. वही जो आपने बोला ना, बचपन से जो कंपैरिजन माइंडसेट होता है ना, जो हमें इनग्रेन कर दिया जाता है, उसकी वजह से सारी चीजें इतनी डिफिकल्ट हो जाती है. बट यस, आई गॉट योर पर्सपेक्टिव एंड डेफिनेटली ट्राई टू चेंज माइंड. थैंक देखो, यू. जो मम्मी को पता है मम्मी वही इसी करेगी. बिकॉज मेरे घर में भी हाँ, ऐसा ही है. मेरे मम्मी के घर में ना, Exactly. माय मामा, माय मासी, एवरीबडी इज लाइक टॉल एंड फेयर. माय मम्मा वाज शॉर्ट एंड डार्क. तो मम्मी ने जो सुना था उसको लगता था ये वो खुद ही बेचारी विक्टिम विक्टिम में खेल रही थी. तो जो उसको नहीं पता, Exactly. शी कुडंट टीच मी व्हाट शी डिडंट नो. इट्स नॉट हर फॉल्ट एट ऑल. So that's what she's trying to say. So, but now it's all cool. We're happy. या ट्रू ट्रू. थैंक यू. So Palak, what did you get out of this conversation? I got the perspective, basically. Perspective that obviously other or my mother's opinion is coming from maybe what she has learned in her childhood or in her life. And obviously it is nothing related to mine, and उनका प्यार तो मेरे लिए जो है सो है ही. But I have to see myself uh, by detaching myself from her opinions, and I have to see myself as whole. So ये especially जो good or bad जो चीजें हमें सिखाई जाती है, nothing is good, nothing is bad. It's up to us how we perceive it. So I guess I got these points, and yeah, I will try to change my perspective. That's it. Hmm. Hmm. What will you do to change your perspective? What will you remind yourself? Uh, the same things which I just told you. Firstly, especially this good and bad thing वाला, ये तो काफी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक्चुअली मैं खुद से भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती. बट जब मेरी मम्मी से वो चीज आती है, कमिंग फ्रॉम माई मदर, बिकॉज शी इज काइंड ऑफ अ परफेक्शनिस्ट इन एवरीथिंग. तो जब मेरी मम्मी से वो चीज आती है तो वो अफेक्ट करती है. एंड वो बचपन से ही See, है. और अगर हमारे घर में इसको अगर मैं एक और तरीके से बोलूं तो at the end you are an extension of her, right? हाँ, ट्रू तो आए तो ट्रू. वहीं से ही हो ना आप. कोई अलग से तो आसमान से तो आ नहीं गए हो. तो you have come from her only. हाँ, तो you बिल्कुल. are an extension of her, right? हम्म. तो ये जो तुमको जो ये लो सेल्फ एस्टीम जो फील हो रहा है,
यू डोंट बिलीव कि ये तुमने इनहेरिट किया है वहां से, वो एनर्जी वहां से चल के आई है यहाँ पर? आई डोंट नो, क्योंकि हम मेरी मम्मी जो है वो तुम्हें शी इज अ तुम्हें वेरी बोल्ड ऐसे इनफ. लगता है कि, हाँ, तुम्हें ऐसे लगता है कि somebody who doesn't have low self esteem, uh, some how will you give somebody uh, tea when you have coffee in your mug? True, I cannot give. हाँ, तो तुम्हारे कप में अगर लो सेल्फ एस्टीम आ रहा है एंड इट इज एन एक्सटेंशन, तो अगर अगर ये आ I रहा है, ये cannot. भर रहा है, तो देने वाले के पास तो वही है ना देने के लिए। So अगर अगर मतलब मैंने अपनी मम्मी की जो मतलब मैं जितना मम्मी को जानती हूँ उस हिसाब से, जितनी बोल्ड एंड वो है, क्योंकि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज बोल्ड, शी इज वेरी लाइक ओरेटर काइंड ऑफ अ पर्सन एंड डिक्टेटर आल्सो. उनके अंदर भी सेल्फ एस्टीम इश्यूज होंगे, ये समझ से मेरा थोड़ा सा बाहर है. हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो दैट इज द थिंग व्हाट आई एम सेइंग कि you cannot give somebody that you don't have. हाँ हाँ. हाँ, हाँ. तो अगर 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 वहां पे अगर कॉन्फिडेंस ही रहेगा तो कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे पास आएगा. अगर इस सिचुएशन से, सो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स वेरी क्विकली मेक किड्स बिहेवियर अबाउट देम. बच्चे अगर गलत बात कर रहे हैं, बच्चे अगर ऐसे है वैसे है, तो पेरेंट्स ना बच्चों को बच्चों की तरह नहीं देखते. दे सी इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ देम कि उनकी वजह से अब इनके ऊपर कैसा, लाइक व्हाट पीपल विल से एंड यू नो व्हाट हाँ, अदर्स true, विल से true, एंड ऑल true, दैट, true, राइट? true, तो true. She has that तो mindset. Yeah. करेक्ट करेक्ट. तो फिर तो एक्सटेंशन तो है ना, तो अगर वो भावना है तो वो भावना तभी तो आएगी ना तुम्हारे अंदर, वो ट्रांसफर तो होगा ना. तो हाउ कैन how can she not have low self esteem and still give it to you? Okay. Okay. Maybe I don't know the traits of And low one self-esteem then example, properly. हाँ. वन एग्जाम्पल आई गिव. लो सेल्फ एस्टीम जब होता है तो ये दो फॉर्म्स में बाहर आता है, right? So one form is basic form which we see where we think that people, oh, we don't have confidence, we don't feel worthy enough, we don't feel deserving enough. Another spectrum of low self-worth. So have you? I'm sure you're, I'm just using an example. So have you heard of this term narcissism? Yes. Yes. Right? Narcissisms go with, an extreme sense of grandiosity, and they are the best, and they are the best people, and blah blah blah, and मतलब उनसे अच्छा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं. Right? Does that mean they So have high self yeah. esteem? It would appear Okay. so. हाँ. It would appear so, but narcissists are people who lie on the spectrum of lowest self esteem. इसके लिए for them to feel worthy, they have to keep controlling other people, showing other people, see, come, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मुझे पेडेस्टल पे चढ़ाओ. जो इंसान के अंदर सेल्फ एस्टीम है उसको पेडेस्टल पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी वर्दी फील करता है. और बिकॉज कोई भी इंसान आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू को तभी समझ सकता है जब वो अपनी खुद की वैल्यू समझता है. जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो आपसे प्यार कर ही नहीं सकता. जिसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है वो आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज यू हैव टू हैव दैट एलिमेंट इन योर कप. So it may appear so that she is very confident, she is very, everything is like in place, and she is like perfect and all that. That's how it appears so. But if she would, if she knew how to handle herself with compassion and love, she would have handled you with compassion and love. Yeah.
right? तो That's ये true, because these traits I can see her in materialistic world. She is like sound perfect, but I know I have seen seen her suffering emotionally, और especially after the marriage जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हम पे pass on हुई हैं. I know. तो वो जो second वाला trait आपने बोला, my mother I think carries that, और जो पहला trait बोला I think I carry that. तो वो दोनों opposite है. हाँ, बस वो आपके अंदर दूसरे फॉर्म में निकल रहा है, हम्म. बट है एक ही सिक्के के दो पहलू है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिक्का एक ही है. Yeah. So if she didn't have that compassion in her cup, Palak, you can fill up your cup with your compassion towards her. That will help you. Yeah, I'm trying that. Yes, I got that understanding. I'm trying to change my perspective and behavior towards her, regardless of whatever she is behaving or expecting. हाँ, Understand this thing कि the objective of all this healing or the learning that we talk about is so कि कोई तो ये chain break करे, right? So True, true. tomorrow when you become a mother, then you don't blindly pass this to your kids. True. क्योंकि Yes. right now that is what you are learning. ये भी आपको भी inherit हुआ है. You got this low self esteem in a like as Namika is saying कि your mother shows low self esteem in a different form as compared to you. So but है वही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. So when we talk about the compassion side, when we talk about the empathy side, that you will be able to generate by seeing कि she is suffering from the same problem that you are suffering. It's just कि उसकी form अलग है, problem same है. Okay. So तो ये Yeah. लो उसको सेल्फ भी एस्टीम एक का ये चीज दूसरा पॉइंट भी होता है, ये मुझे आज तक पता ही नहीं था एक्चुअली. दिस इज एन इनसाइट फॉर मी टुडे. और मुझे पता ही नहीं था कि हाँ क्योंकि वो इतनी मतलब शी हैज एवरीथिंग जो होना चाहिए ह्यूमन, एक ढंग के ह्यूमन बीइंग में जो बोलते हैं, मतलब कि हाँ सुंदर वो होना, ये होना, लड़की में होना, करेक्ट. तो वो सब है उनके अंदर. तो वो मतलब पता ही नहीं चलता कि ऐसे इंसान में भी लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, तो फिर जिनमें नहीं है उनमें तो होगी. नहीं, लेकिन तुम समझी नहीं इस चीज को. ये सुंदरता नहीं है. सुंदरता इज नॉट जो ममता वाज टॉकिंग अबाउट कि हर चीज में सुंदरता देखना इज व्हाट इट इज. हाँ हाँ, मैं समझ जस्ट गई एक आपका चीज पॉइंट. को पकड़ लो और उसको बोलो कि यही सुंदर है, वो नहीं है डेफिनेशन सुंदरता. वो एक ओपिनियन है. लाइक यस यस. for one person may like one guy might like a girl who has white complexion, another guy might find beauty in a girl who has dark complexion. Yes, So yes. ये स्टैंडर्ड नहीं है. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. The beauty is when you are capable of seeing beauty in anything. सो एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के बैठ जाना और उसको ही ब्यूटी डिफाइन करना कि वही है, वही अगर है तो ही सही है, और मेरे पास है तो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, और तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुमको लोअर फील करा रहा हूँ. तो मैं तो ऑलरेडी अंदर से एक तरह से डरा हूं ना कि अगर मेरे पास नहीं होता तो. ओके, या ट्रू ट्रू. राइट. तो जिन लोगों तो क्योंकि जो चीज को मैं पकड़ के बैठा हूं वो तो कभी भी छिन सकता है ना. सो दे फील लाइक कि तो मेरी सारी ताकत ही इसलिए है क्योंकि मेरे पास ये है, राइट? हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने अलग अलग वर्जन्स में ब्यूटी नहीं देखी, तो इसलिए उसको पकड़ के रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो पकड़ के रखना भी फियर ही है, फियर ऑफ लूजिंग इट. जो लोग लाइक दे से कि मेरा एक फ्रेंड था सिडनी में बहुत टाइम पहले, तो उसने मेरे को एक बात बोली थी एंड इट वाज क्वाइट वे जस्ट द वे ही सेड. तो he has got so many degrees, like so many degrees, double masters, triple masters. पता नहीं, वो जब अपनी वो ईमेल में अपना वो सिग्नेचर लिखता है तो 2 लाइन तो उसकी सिर्फ डिग्री लिखने में ही जाती है. तो इतनी सारी डिग्रीज उसके पास है. एंड ही वाज वन डे ही वाज टेलिंग मी, ही सेड कि the more degrees I am accumulating, the more insecure I am becoming.
True, true. तो जब हम कोई चीज, जब किसी के पास बहुत पैसा भी आने लगता है तो इंसान इनसिक्योर होने लगता है कि छीन ना जाए मुझसे ये चीज, Yes, yes, true, true. क्योंकि वो ना फिर उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि उनके हिसाब से यही है, वो तो बाय लक मिल गया, लॉटरी लग गई या कुछ भी हो गया, वो मिल गया, लेकिन उसको छीन जाने का डर, इनसिक्योरिटी हमेशा अंदर बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने ब्यूटी या अबंडेंस और किसी चीज में देखी ही नहीं है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्सो लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, क्योंकि अंदर से तो वो बहुत डरे हुए हैं उस चीज से। Got your point. Got your point. One more thing I would like to add about, when it comes to, parents' behavior and all that. So, अगर मैं अपनी story share करूँ, so, Palak, my mom would also continue to say these things to me at times, that mean things. And the more I started disregarding and, not accepting her words, the meaner she got. Yeah, and she got even meaner and meaner day by day. So now the thing is that, see, this is a mechanism for, people to control other people, to make them, by making them feel guilty about themselves. क्योंकि उनके हाथ में ना kind of एक control होता है कि उनको पता चल गया है कि अगर इसको ये बोलेंगे, इसको ये बात चुभेगी. हाँ, I am not saying that my mom was doing it with bad intention. उनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है. उनको ये लगता था ना, जैसे कि पुराने जमाने के जो लोग होते थे, उनको कैसा होता था कि उस टाइम की पेरेंटिंग ऐसी थी वेयर ये सिखाया जाता था बच्चों को कि ये नेगेटिव चीजें बोलेंगे ना बच्चों को, तो उनको ये मोटिवेशन आएगा कि नहीं, अभी हमको कुछ करना है. उस टाइम की पेरेंटिंग ऐसी होती थी, राइट? तो उनकी ना आदत पड़ी हुई है, उनको लगता है ना कि वो हमको कोई सर्विस कर रहे हैं, हमको ये नेगेटिव चीज बोल के. तो जब भी मैं आई वुड रिवोल्ट एंड आई वुड आस्क माय मॉम दैट व्हाई यू से सच मीन थिंग्स टू मी, शी वुड बी लाइक, तुम्हारे भले के लिए तो बोल रहे हैं, तुम्हारा अच्छा ही तो चाहते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं, नहीं तो तुम इम्प्रूव कैसे करोगे लाइफ में. एंड आई एम लाइक कि इफ यू वांट मी टू इम्प्रूव, tell me what I can do to improve, tell me, share me things, I'm ready to improve, let's have a conversation. क्या करना है बताओ. बट ये कौन सा तरीका है, where like the examples that you are, she would, like yesterday night we were having a conversation and she went way past 8 years. 8 साल पहले तुमने ये डिसीजन लिया था, उसके लिए तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई, उसके कारण से आज ये सब कुछ. एंड आई वाज लाइक, आई हैड टू हार्ट स्टॉप हर. आई वाज लाइक, मॉम, वेयर इज दिस गोइंग? इफ यू वांट मी टू डू समथिंग, तो मुझे अभी बोलो कि what can I do for you, what can I do to make anything in this situation better. But there's literally no point cribbing about that. And I had to set that boundary with her in a very loving way, in a very assertive way. And trust me, parents के साथ boundary set करना is the hardest thing, क्योंकि आपको बार बार वो इतना assert करना पड़ेगा ना, that वो जब तक उनके flesh and bones में जाता नहीं है. And trust me, पहले मैं ना पॉजिटिव तरीका ट्राई करती थी, तो इट वाज नॉट वर्किंग. बट देन आई स्टार्टेड सेटिंग बाउंड्री. ठीक है, क्योंकि पहले ना मैं ऑब्लिगेशन से आती थी, दैट शी इज माय मदर एंड आई हैव टू मेक, आई कैन नॉट हर्ट हर, आई कैन नॉट मेक हर फील बैड, आई कैन नॉट डू दिस और दैट. तो मुझे बहुत ऑब्लिगेटेड फील होता था. वो जो बोलते हैं ना पेरेंट्स, हमने तुम्हारे लिए इतना तुमको पाल पोस के बड़ा किया, सब ये किया वो किया, और तुम ऐसे बात करते हो हमसे. So I had to keep that thing away, because what they did for me, I would also do for my kids. But that doesn't mean that I want my kids to be obligated to me. कि जैसे मैंने कोई एहसान नहीं किया है उनके ऊपर, कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसके लिए उनको पैसे वापस करने. So I had to accept this fact, and I had to accept this fact why she does it, and then assert those boundaries कि हाँ अभी ऐसा है, अभी अभी टॉपिक पे आओ, अभी बताओ अभी क्या कर सकते हैं, अभी 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 अभी. The last few months I'm actually seeing the signs of improvement where she is able to heart stop herself. Otherwise उनका जो ट्रेन चालू होता था, she would go on, but now that does not happen. So with them you have to like one door at small window at a time, another small window at a time. ये धीरे धीरे बिल्ड करके ना मसल अपनी वो बिल्ड करनी पड़ती है. एंड ऑल ऑफ दिस आई एम डूइंग विद हर, नॉट बिकॉज आई एम एंग्री एट हर, but because I really, really, really love her. And
what she does not help me, and when she puts me in that space, मैं खुद नेगेटिव हो जाती हूँ और फिर वो नेगेटिव हो जाती है, and it's a loop. So somebody has to take the responsibility so that we can change these things. नहीं भी होता change तो मुझे कोई problem नहीं है. If she does not change, मत हो, वो उनकी choice है, right? But at least कुछ possibility है कि कुछ change हो सकता है. Otherwise वही मेरे को वो guilty feel कराएंगी, वही होगा, वो same story रोज repeat होती है घर में, वही रोज चल रहा है. No use. True. Yeah. True. Same scenario happened at my home too, but yes, I am trying my best to assert the boundaries and obviously change my perspective too. Yeah. You know what I understood? Okay, one more thing. मतलब I'll talk about my mom. तो कैसा होता था कि हाय हाय मैंने ऐसा बच्चा कैसे पैदा कर दिया, you know, they just want to feel so fulfilled and they so much want to show कि हाँ मेरा बच्चा इतना मस्त है, you know, तो अभी काला बच्चा कैसे पैदा कर दिया, पतला बच्चा कैसे पैदा कर दिया, you know, so they feel so incomplete. मतलब मैं अपने मम्मी का बोल रही हूँ, तो उनको लगता है यार कुछ तो मैं सही कर लूँ लाइफ में, you know, so my mom used to feel this कि पहली वो बचपन से इतनी rejected and made to feel bad about her complexion and all that, तो उसको ऐसा लगता था कि यार and then she got married to my mom got married when she was 13 and she got married to my father. क्या अक्ल होती मतलब 13 साल की लड़की को और 15 साल की लड़के को, ओके, एंड स्टेप मदरली ट्रीटमेंट और वो सारी चीजें, तो मम्मी को ना हमेशा ऐसे बैड फील कराता था, तुम तो काली हो काली हो काली हो. सो आई थिंक माई मदर प्रेड ऑल द टाइम कि हमारे सारे बच्चे ना अपने बाप के जैसे हो जाए और गोरे हो जाए और एक भी बच्चा काला नहीं हो, ठीक है, एंड आई हैपेंड. तो उसको ऐसा लगता था हाय हाय मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने गोरा बच्चा क्यों नहीं पैदा किया. एंड वेयर इज आई लव इट एंड आई एम लाइक वाओ, बिकॉज आई लव माय मदर सो मच. और मुझे ऐसा लगता है यार मुझे मेरे मम्मी का ब्यूटी मिल गया, बिकॉज मेरे को लगता है सबसे ब्यूटीफुल औरत वही है, और मुझे मेरी मम्मी का रंग मिल गया यार, मुझे मेरी मम्मी का रंग मिल गया, मेरे डैडी का कैरेक्टर मिल गया, मतलब और क्या ही चाहिए. मैं इतना उसको प्यार से देखती हूँ, बट वो क्या चीज से देखती है, तो हमारी वो जो डेफिनेशंस भी होते हैं ना, तो डेफिनेशंस की तो बहुत लग जाती है, डेफिनेशन की वजह से तो बहुत लग जाती है. हाँ, डेफिनेशन you थोड़े know, बदले ना. ममता, मैं अपनी मम्मी को हमेशा ऐसे बात करती है तो मैं यही बोलती हूँ कि भगवान करे अगले जन्म में तुमको बिल्कुल वैसा बच्चा मिले जैसा तुम चाहती हो. आई विल प्रे फॉर एंड उसके बाद उनका बिल्कुल ट्रैक चेंज हो जाएगा. नहीं नहीं, बच्चा नहीं बदलना है मुझे. हाँ, अरे उनको 4 लोगों में दिखाना भी तो है ना कि मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, ऐश्वर्या राय. तुम्हारी बच्ची का नाम कैसा है. So they want to cover up, no? उनको भी तो वैसे थोड़ा इक्वल फील होना है ना, लो सेल्फ एस्टीम है, होना है. True. तो वो फील होना है. आई थिंक एवरी पेरेंट वांट्स. मेरे टाइम पे ऐसा होता था ना, हर मम्मी को चाहिए होता था कि मेरी बेटी ना इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय के जैसा हो ताकि उसको सलमान खान जैसा दामाद मिले. लिटरली my mother used to love सलमान खान. काश मेरी बेटी ऐश्वर्या राय जितनी सुंदर होती तो सलमान खान जैसा बनता. ओह गॉड, थैंक गॉड. सलमान खान की वेट करते थे तो शादी नहीं होती थी. देखो, oh god, it's so funny. I think after healing, no, सब कुछ funny लगने लगता है. And I just loved what you spoke, Akarma. You said कि पहला तो कोई चेन ब्रेकर होना चाहिए. मुझे बहुत मजा आती है टू बी द चेन ब्रेकर. सो अभी वो अपनी बच्ची को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. And you guys are doing such amazing job. I think this is beautiful. Such an amazing call today. Right. Seriously. Thank you so much. It is. Thanks to you too for adding your stories and experiences. Yeah, And today's call is like really a life changer for me. Today's call has given me a very new perspective and insight, I guess. I mean, thank you, Akarman, Anamika, and Mamta too, Dina too. Thank you, everyone. Wonderful. Namrata, your hand is up. You want to say something? Hi, Akarma. I had a question to previous conversation जहाँ पे आपने I don't remember उनका नाम,
बट आपने एक जगह पे बोला था दैट इट्स अ मेड इन हेवन मैच जहाँ पे यू हैव वन अवॉइडेंट एंड वन एंशियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन, राइट? उसमें आपने बोला था कि सीड तो बहुत पहले एक्चुअली हो जाता है क्योंकि यू अट्रैक्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है इफ यू जो इंसान एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में है, they might attract avoidant because they had absent father or they had abandoned issues. Yeah, definitely. That is a possibility. Okay. Yeah. Okay. हाँ, बस वही Yeah. question था मेरा. Thank you. Acha, no problem. Beena, your hand is up. You wanted